Last period we studied that cell membrane and its function. So if we see the structure of cell membrane, structure of cell membrane. Cell membrane is made up from protein and lipid. Protein, lipid, and protein. Protein, two types of protein is there. The globular protein. Protein is a globular protein, and two type of protein present. That is external protein. Another one is of internal protein. External protein and internal protein. It is of globular type. Protein is of globular type. External protein and internal protein. These are the external protein. This is the external protein, and this one is of internal protein. So two layer of protein is there, both sides, external protein, and between external protein, two layers of lipid layer is there. Two layer of lipid present between the external protein. At some places, internal protein is also present. This is the structure of plasma membrane, and this structure is known as fluid mosaic model. Fluid mosaic model, and it was given by the Singer and Nicholson. The two scientists given the fluid mosaic model, that is Singer and Nicholson. The fluid mosaic model will change according to requirement. Whenever plant or animal or particular cells require changing in the particular model, so it will be changed. That's why it is known as mosaic model. Mosaic मतलब वो अपने आप को conditions के according, situation के according change कर सकता है. Cell membrane perform different function. It provides the shape of the cells, help in the protection. It maintain the different, control the different different things which is important export जो प्लांट के सेल के अंदर आ रही है या उससे बाहर जा रही है उन सबको मेंटेन करने का काम करती है. In one cellular unicellular organism just like amoeba, it also help in the intake of food material and outtake of food material. Intake of food material is known as endocytosis. Whenever amoeba intake food material, that process is known as endocytosis. Amoeba is irregular structure. Whenever it contact with the food material, it forms pseudopodia. That is false feet, and these pseudopodia engulf the food material inside like this way, and that process is known as endocytosis. Intake of food material by the unicellular organism. Intake of food material by unicellular organism through the cell membrane, that is endocytosis. Intake of food material by unicellular single cell organism, that is the endocytosis. And remove waste material with the help of exocytosis. Exocytosis, the removal of waste material through the cell membrane, that process is known as exocytosis. The unicellular organism intake of food material and outtake of waste material. Also helping the gaseous exchange, different things which is present inside the plant cells or different gases present inside the cells, which also export or import with the help of cell membrane. So these are the
function of cell membranes. Now, the next cell organelle is of that is cell wall. Cell wall. Cell wall, it is outermost boundary of plant cell. It is only present in plant cell. It is absent in the animal cell. Cell wall, it is of three types. First is of middle lamella. Second is of primary cell wall. Second is of secondary cell wall. Third of three types: middle lamella, primary cell wall, and secondary cell wall. Middle lamella is made from calcium and magnesium peptide. Calcium and magnesium. It is present innermost layer between two cells. It works as a cementing layer. दो cells को जोड़ने का काम करती है, सीमेंट की जैसे ये जोड़ने का मिडिल लेमला काम करती है. और मिडिल लेमला के ऊपर जो सेल वॉल बनती है, दैट इज द प्राइमरी सेल वॉल. इसके ऊपर ये जो वॉल लेयर बन रही है, इसको प्राइमरी सेल वॉल कहेंगे. जो साइटोप्लाज्म होता है, उसके थ्रू इसका डिपोजिशन होता है. ये प्राइमरी सेल वॉल. It is made up from cellulose and hemicellulose. Made up from cellulose and hemicellulose. And secondary cell wall, जो कि प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर बनती है, उसको अपन सेकेंडरी सेल वॉल कह सकते हैं. प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर वाली सेकेंडरी सेल वॉल. कभी-कभी टर्शियरी सेल वॉल भी मिलती है. ये केवल सेल्यूलोज की होती है. सेल वॉल जो है स्पेशली प्लांट्स के अंदर सेल्यूलोज की होती है. फंजाई के अंदर ये काइटिन की होती है. और बैक्टीरिया के अंदर ये पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है. It help in the protecting the cell, plant cell. Especially इसका मेन फंक्शन क्या होता है? प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करना होता है और सेल को सेल को मेंटेन करना. सेल मेंटेन होता है सेल वॉल के थ्रू. एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नॉट बी always in animal cell wall is absent. At that if we see the fruit, unripe fruit is tight, but the ripened fruit pulpy and pulpy fruit is there due to the dissolving of cell wall. उसमें क्या होता है? सेल वॉल डिसॉल्व हो जाती है, इसलिए वो पल्पी होते हैं. जबकि अनराइप फ्रूट होते हैं एकदम से हार्ड होते हैं. तो सेल वॉल मेनली फंक्शन टू प्रोवाइड द पर्टिकुलर सेल and help in the protection of cell, that is the cell wall. Then cell organelles. Cell organelles, different cell organelles present in the cell. First of all, we see that is nucleus. Nucleus, in some organism nucleus is well defined, nucleus is there, but not in all. In some organism well defined nucleus is absent. So on the basis of nucleus, cell is divided into two types, that is of prokaryotic cell and another is of eukaryotic cell. In prokaryotic cells, if you see, the well membrane bounded cell or nucleus is absent. Well membrane bounded nucleus absent in prokaryotic cells. If we see prokaryotic cell, that is single chromosome is there, on which nuclear membrane is absent, and this is called nucleoid.
The nucleus of prokaryotic cells called nucleoid membrane bounded cell organelles absent, just like mitochondria, chloroplast, Golgi apparatus, lysosome. These are absent in the prokaryotic cells, and chromosome equivalent to one chromosome is there, but if you see for eukaryotic chromosome is of more than one chromosome is there, and 70s type of ribosome present inside the prokaryotic cells. Ribosome is there, which is 70s type. 70s ribosome. Cell wall may or not may cell wall. If cell wall is there, that is made up from peptidoglycan cell wall present outside. On some cells, a slippery mucinous covering is also present. At some places, the cell membrane highly folded inwards to form a structure, semicircular structure. The structure is known as mesosomes. It is function as a mitochondria, but true mitochondria is absent. This is the simple structure of prokaryotic cells. If the flagella is there, in flagella 9+2 arrangement is absent. 9+2 arrangement means if we take the transverse section of flagella, इसका transverse section लें तो इसमें पेरिफेरी पर 9 फिलामेंट्स नजर आते हैं और सेंटर के अंदर 2 फिलामेंट नजर आते हैं. इस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? 9+2 अरेंजमेंट. Which 9+2 arrangement flagella and 9+2 arrangement absent in the prokaryotic cells, but it is present in eukaryotic cells. Write down difference between prokaryotic and eukaryotic. First you draw the diagrams, then write down difference between prokaryotes and eukaryotes. Well, membrane bounded nucleus absent. Right in eukaryotic cells, membrane bounded nucleus present. Membrane bounded nucleus present. Membrane bounded nucleus present. Next लिखिए nucleus called nucleoid. Nucleus called nucleoid. Nucleus called nucleoid. Nucleus called nucleoid. In eukaryotes, nucleus called nucleus. Nucleus called nucleus. Next, small in size. Prokaryotic cell, small in size. Eukaryotes, large in size. Prokaryotes, small in size. Eukaryotes, large in size. Next, prokaryotes, equivalent to one chromosome present. Equivalent to one chromosome present. Equivalent to one chromosome present. In eukaryotes, more than one chromosome present. More than one chromosome present. Next, maximum membrane bounded cell organelles absent. Maximum membrane bounded cell organelles absent in prokaryotes. Maximum membrane bounded cell organelles absent. Maximum membrane bounded cell organelles absent. Eukaryote में लिखिए membrane bounded cell organelles present. Membrane bounded cell organelles present. Membrane bounded cell organelles present. Membrane bounded cell organelles present.
नेक्स्ट लिखिए 70s टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट यूकेरियोट प्रोकैरियोट्स में 70s टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इधर लिखिए 80s टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट 80s टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट 80s type of ribosome present 80s type of ribosome present next if flagella present located if flagella present पहले G double L if flagella present 9+2 arrangement absent if flagella present 9+2 arrangement absent in eukaryotes 9+2 per arrangement present 9+2 arrangement present 9+2 arrangement present example prokaryotes example bacteria cyanobacteria mycoplasma bacteria cyanobacteria mycoplasma example of eukaryotes fungi plants animals fungi plants and animals so these are the difference between prokaryotic cells and eukaryotic cells now nucleus is the main cell organelles of the cell. It controls all the function of the cell. Nucleus is bounded by two membrane. It is bounded by two membrane. Nucleus, outer nuclear membrane and inner nuclear membrane. It is bounded by two membrane, outer nuclear membrane and inner nuclear membrane. Outer membrane attached with the endoplasmic reticulum. And this nuclear membrane interrupted by small pores, these are known as nuclear pore. Outer membrane, this one is of inner membrane. Inside the nucleus, a fiber-like structure is there that is known as chromatin fiber. And the ground substance is also there that is known as nucleoplasm. One or two granular substance may be there. These granular substance known as nucleolus. Nucleus control all the function of the cell. That's why it is known as brain of the cell. It is known as brain of the cell. It controls all the function of the cell. Chromatin fiber at the time of cell division. Chromatin fiber form chromosomes. At the time of cell division, it forms chromosomes.
chromosome made up from DNA and protein. Chromosome is made up from DNA, protein, and on which genes is there, and genes is the basic unit of characters. This is the structure of chromosome. On the short segment of chromosome we name known as gene, and that is made up from DNA and protein, and all the characteristics features of our body that gene is responsible. Suppose a person having curly hairs, that means that person having curly hair gene. A person having blue eyes means in that person blue eyes color gene is there. So all the factor which is seen in the human beings, the gene is responsible for all the character, and that comes from the parents. That not acquire after the birth. Lifetime में अपन ऐसी कोई चीज नहीं ले पाते हैं. ये सारे character क्या होते हैं by birth होते हैं, जो कि genes के ऊपर होते हैं, और genes क्या होते हैं क्रोमोसोम पे होते हैं. क्रोमोसोम में ये जो दो ब्रांचेज है ये कहलाती है क्रोमेटिड, और बीच में यहाँ पे ये जुड़ा रहता है उसको कहते हैं सेंट्रोमियर. According to position of centromere, chromosome is a four type. अगर क्रोमेटिड के सेंटर में सेंट्रोमियर है तो उस तरह के क्रोमोसोम को कहते हैं मेटासेंट्रिक. सेंट्रोमियर एकदम से सेंटर में है तो वो मेटासेंट्रिक कहलाएगा. सेंटर से थोड़ा साइड में है, एक ब्रांच थोड़ी बड़ी है और एक ब्रांच थोड़ी छोटी है, दैट सब मेटासेंट्रिक. अगर एक ब्रांच बहुत छोटी है और एक ब्रांच बहुत लंबी है तो वो किलोसेंट्रिक. सॉरी एक्रोसेंट्रिक. एक ब्रांच बहुत छोटी और एक ही ब्रांच है सेंट्रोमियर एकदम से साइड में है तो उसको किलोसेंट्रिक. So on the position of centromere, chromosomes of four type. Metacentric when the centromere present at the center, centromere center में तो उसको metacentric कहते हैं. centromere center से थोड़ा ज़्यादा साइड में हो गया तो सब metacentric कहलाएगा. और बहुत ज़्यादा साइड में हो गया जिसमें एक ब्रांच बहुत छोटी और एक ब्रांच बहुत बड़ी है तो एक्सोसेंट्रिक कहलाएगा. और कंप्लीटली टर्मिनल पोजीशन पे है जिसमें एक ही ब्रांच होती है और सेंट्रोमियर एक साइड में हो गया तो वो कहलाता है किलोसेंट्रिक. So on position of centromere, all four types of chromosome is there. In a single one person, just like in human beings, four types of chromosome is there. सब में सारे अलग होते हैं. Just here only 23 pair of chromosomes, and these 23 pairs some addition, metacentric, some of kilocentric, some of heterocentric, some metacentric. So all four types of chromosome present in human beings. Then next cell organelle is of ER. ER, that is endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. It is made up from three types of elements. That is cystine, plate shape-like structure is there. Plate shape-like structure. This structure is known as cystine, and some tube-like structure is there. That is tubules, and some spherical structure is known as that is vesicles. So ER is made up from three types of structure: tubules, cystine, vesicles, and the membrane of ER is also made up from protein, lipid, and protein. Just like the composition of
प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी बनी होती है वैसी ही ये बनी होती है, वैसे ही चीजों की ये बनी होती है, प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ईआर दो तरह का होता है, एक तो एसईआर होता है और दूसरा आरईआर होता है। एसईआर मींस स्मूथ ईआर, स्मूथ मींस इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं, और दूसरा होता है रफ ईआर, इसकी सरफेस रफ हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं तो उसकी यार इसकी जो सरफेस है वो रफ हो जाती है, जिसको रफ ईआर कह सकते हैं। गोल्जी एपरेटस को कैमिनो गोल्जी ने फाइंड आउट किया था, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर भी वही सिस्टमिक ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स, तीन तरह की चीजें होती है। सिस्टमिक ट्यूब्यूल्स, वेसिकल, छोटी चीजें और छोटे होते हैं, फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं, जस्ट लाइक सिस्टमिक, इस तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं सिस्टमिक, और वेसिकल्स इस तरह के हो सकते हैं। गोल्जी एपरेटस का भी वही फंक्शन है जो लगभग थोड़ा थोड़ा इसका होता है, ईआर का होता है, और इसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं गोल्जी एपरेटस में। गोल्जी एपरेटस को बहुत सारे नाम से बुलाया जाता है, इसको गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, इसको डाल्टन्स बॉडी बोलते हैं, इसको बेकर्स बॉडी बोलते हैं। इन प्लांट सेल इट इज नोन एज डिक्टियोसोम। प्लांट सेल के अंदर इसको क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहा जाता है। बाकी बेकर्स बॉडी, गोल्जी एपरेटस, डाल्टन्स बॉडी, अलग अलग नाम इसके, बट इन स्पेशली इन एनिमल सेल इट इज नोन एज गोल्जी एपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और इन प्लांट सेल इट इज नोन एज डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम प्लांट के अंदर इसका मेन फंक्शन है प्रोवाइड मेम्ब्रेन टू द न्यू सेल ऑर्गेनेल्स, न्यू सेल ऑर्गेनेल्स को मेम्ब्रेन प्रोवाइड करने का काम करता है। सेल वॉल बनाने के टाइम में सेल वॉल, जब न्यू सेल बनती है तो सेल वॉल फॉर्मेशन का काम करता है, और सम हार्मोन्स और एंजाइम सिंथेसिस का काम गोल्जी एपरेटस करता है।